Okay, so we are going to starting the session, and today we're going to discuss about the Microsoft PowerPoint. My screen is visible for you all. Wait a second. Mm, Okay, so this was actually the Microsoft PowerPoint that we're going to discuss today. And today, inshallah, we're going to start our next Microsoft tool, which is PowerPoint. We have ended Microsoft Word, and you will going to get the recorded lecture soon, inshallah, in the Google Drive and on YouTube channel as well. So आज जो है हम लोग अपना PowerPoint start करने जा रहे हैं. In today's session, we're going to learn some basics and some tools and some features which we're going to get in the update of 2010. So आज के सेशन में जैसे वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, और इस सेशन के अंदर हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे और जितने भी फीचर्स हैं वो सब के बारे में बात करेंगे. अदर थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू आल्सो give you some tips in this sessions in this course of Microsoft PowerPoint. In further sessions we're going to give you some tips and techniques that how you can create some unique templates with the unique designs or templates आप लोगों को offer किए जाएंगे, and you're going to work on that templates and create a good and effective presentation. Okay, so let's start. As you already read, this is actually a preface of Microsoft PowerPoint in which you can create a presentation. Okay, this was the first page, which is you can say that it's a title page. You can add a title in this box. Like आपको यहाँ पे दो box offer किए जाते हैं, which is called text boxes. First you have to add any title in it. So let's take an example. Like I can type Technolitrate. It's my heading, and it's sub, and we can add a subtitle as well, which is computer कोर्स. सो अब जो है हमने एक सब टाइटल और हेडिंग जो है वो दे दी है. नाउ हाउ यू कैन गिव देम द फॉन्ट्स एंड हाउ कैन यू अप्लाई सम फीचर्स ऑन दिस टेक्स्ट. सो वी विल डिस्कस इन टुडे सेशन. ओके, let's start with the left side. You can see that here you can see a new slide option. It was having a shortcut as well, like आप control plus M दबा के, या फिर you can click on the new slide and you can get the many other slides as well. यानी कि आपके कंटेंट और आपके टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको बहुत सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी. लाइक फर्स्ट वी हैव द टेक्स्ट स्लाइड, then we're going to have the title and content slide, section header, two contents. ये सब जो है हमारी these all were the templates, these were all were the designs of the slides that we're going to work on it. We're going to tell you each and every slide one by one, but before that we're going to tell you that what is the title slide. Okay, so first of all you can click, if you can click on the layout, you can see that after the new slide you can see there's a layout option was given. So by clicking on layout you can get many layouts of the slides. You can choose any of the one you want to add. Other than this, by clicking on reset, your all the things which you are working, like आपकी पूरी slide जो है वो reset हो जाएगी जिसपे आप work कर रहे होंगे. Other thing is that you can add a section as well. Like if you go to click on add section, so you're going to get a section left of your desktop. पर इसके लिए आपको कोई और slides भी जो है वो use करनी पड़ेंगी. Like अभी जो हम यहाँ title slide पे काम कर रहे हैं, then we're going to move ahead on the title and content and then section header. So one by one हम जितनी ज़्यादा slides पे work करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे section create होता जाएगा, and then you will go to get the all the slides which you are working in a sequence. आपको यहाँ sequence में show होने लग जाएगी. So we're going to work on the title slide, and wait a second, I will go to type again Technolitrate. It's a computer course. Okay, so now we're going to move ahead, and you can see that in the as the same way in Microsoft Word we're going to have a same option in Microsoft PowerPoint as well, like the font option. यहाँ पे बहुत सारे fonts आपको mention है. You can check, you can take any of the font you want to take for your heading. Like आप यहाँ पे कोई भी जो है font ले सकते हैं. Let's take an example, like I can choose an Arial font to make my text bold. So then you can choose any bold, italic, underline. These were all the options that were same in Microsoft Word as well and the Microsoft PowerPoint as well. Other than this, you can make your text large as well. You can create your text small as well. अपनी जो heading है वो अपने title जो है अपने size के according भी आप you can select it. आप कोई भी size इसके according select कर सकते हैं. You can, okay, now you can see that there's many cases were given, like sentence case. If you select the sentence case, your heading फर्स्ट अल्फाबेट वुड बी कैपिटल एंड रेस्ट वुड बी स्मॉल. आपका सेंटेंस केस चूज करने पे आपका फर्स्ट हेडिंग की जो फर्स्ट अल्फाबेट है यानी कि टी वो कैपिटल होगा, एंड देन ऑल द अल्फाबेट वुड बी स्मॉल. इफ यू चूज द लोअर केस, देन योर होल हेडिंग वुड बी ना स्मॉल
alphabets. If you choose the uppercase, then your whole heading, your whole title would be in a uppercase. That means your whole title would be in a bigger alphabets. यहाँ पे आपको जो है सारी larger alphabet नजर आ रही होंगी. और if you can choose any capitalize each word, that means आपका हर heading, यानी कि अभी मैं Technolitrate mention किया. If I will going to make it more further, so you can see that Technolitrate tech साइट. अब अच्छा आपको नजर आ रहा होगा कि टेक्नोलाइट्रेट का टी एंड टेक साइट का भी टी, दीज बोथ वुड बी इन अ लार्जर फॉन्ट. सो दैट्स मीन दैट आई हैव चूज कैपिटलाइज ईच वर्ड. दैट मीन द हेडिंग्स फर्स्ट अल्फाबेट वुड बी कैपिटलाइज. ये सेंटेंस केस के सिमिलर ही है, एक तरह से आप इसको समझ लें. अच्छा टुगल केस में ये होगा, योर फर्स्ट अल्फाबेट वुड बी इन अ स्मॉलर केस एंड योर रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट वुड बी अ लार्जर केस. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टी जो है वो स्मॉल है, बाकी सब अल्फाबेट्स जो है वो सब लार्जर फॉन्ट में. सो एक तरह से ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर. अदर थिंग इज दैट यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट एज वेल. लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको थीम कलर्स मेंशन है. यू कैन टेक एनी ऑफ द कलर यू वांट टू टेक एंड देन you can take any of the color you want to and related to your template. आप अपनी डिजाइन के अकॉर्डिंग आप कोई भी कलर ले सकते हैं that would be suited your presentation. Let's take an example. मैं यहाँ पे blue color ले लेता हूँ और then we're going to move ahead. Now we're going to have in a paragraph option, we're going to have the center text, or you can make your text align. These all are the alignments. आपको अपना जो है वो heading अगर आपको left side में mention करनी है, you can create a left alignment. You want to if you want your heading would be in a middle area, so you can create a center text, or you can do the right side as well. ये एक तरह से Microsoft Word जैसा same feature है that was given in Microsoft PowerPoint as well. I want my text to be in a center position, so I have choose the center alignment. Other thing is that you can give your text bullets as well. Normally आप टाइटल को तो बुलेट नहीं दे सकते हैं, मगर अगर आप कंटेंट जो आप मेंशन करेंगे उसको आप बुलेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं. So these were actually bullets that you can use in your designs, in your PowerPoint presentation. Other thing is that you can choose the alphabets as well. Like आप यहाँ पे alphabets, number, romans, जितने भी यहाँ पे आपको mention है यहाँ पे, तो एक तरह से bullets form के अंदर ही है. पर यहाँ पे आप 1 2 भी ले सकते हैं, ABC भी यूज कर सकते हैं, and you can use a Roman numbers as well for your bullets, for making your points visible separately. Okay. Other thing is that you can choose these things. Like आपको यहाँ पे कुछ और भी डिजाइन मिल सकते हैं आपको कि आप किस तरह अपने टाइटल को मेंशन कर सकते हैं. लाइक यू कैन मेंशन योर टाइटल इन अ रोटेट फॉर्म एज वेल. लाइक ये देखिए 90 डिग्री के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो मेंशन हो चुका है कि टेक्नोलाइट्रेट टेक्स्ट साइट. अभी एक हॉरिजेंटल फॉर्म में मेंशन हो चुका है, बट इट वाज अ 90 डिग्री एंगल. You can create another style as well. Like you can make your text rotate to 270 डिग्री as well. अब जो है मेरा टेक्स्ट 270 डिग्री रोटेट हो चुका है. लाइक अब जो है वो टेक्नोलाइट्रेट जो है इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द 270 डिग्री रोटेट टेक्स्ट. यू कैन मेक योर हेडिंग स्टेक्ड एज वेल. यानी कि आपको जो है आपकी हेडिंग स्टेक्ड फॉर्म में मिलेगी. यानी कि नॉर्मली ये होता है कि जो भी लाइंस होती हैं वो अल्फाबेट्स 1 बाय 1 होते हैं, मगर यहाँ पे आपको आपके अल्फाबेट्स वेट अ सेकंड, आपको यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स जो हैं वो स्टैक फॉर्म में, यानी कि हर अल्फाबेट को सेपरेटली उन्होंने एक स्टेक में डिवाइड कर दिया. सो दिस वाज आल्सो अ स्टाइल यू कैन डू फॉर योर text. Okay. Other thing is that you can see that you can make your heading in a top position as well, in a middle position and in a bottom position as well. नॉर्मली ये फीचर जो है वो कंटेंट के लिए मैटर करता है, हेडिंग्स के लिए नहीं, टाइटल्स के लिए नहीं, बल्कि कंटेंट के लिए कि आपको अपना जो कंटेंट है टॉप पोजीशन पे मेंशन करना है, मिडिल में करना है या बॉटम में करना है. तो ये हेडिंग्स के लिए ये यूजुअली लोग यूज नहीं करते, बट यू कैन यूज इट. इट्स योर ओन चॉइस. अदर देन दिस, अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ बहुत सारे आपको ग्राफ्स शो हो रहे हैं जो कि ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप अपने इस सिंपल हेडिंग को, लाइक आई हैव मेंशन्ड टेक्नोलाइट्रेट टेक्स्ट साइट इन अ सिंपल फॉर्म, a simple heading form, but you can create it in a graphical form as well. Like आप यहाँ पे बहुत यहाँ पे graphical methods दिए हुए हैं. आप यहाँ पे किसी भी font में ले सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे cursor move कर रहा हूँ, and you can see that there are many designs was appearing on my screen. आप यहाँ पे देखिए, you can make it like you can organize chart as well. You can make it as like this as well. आप यहाँ पे किसी भी तरीके से आप इसको mention कर सकते हैं. You can write it as well this form as well, and you can
make it in a different form as well. Like यहाँ पे बहुत सारे graphical methods हैं, आपको जो भी आपको graph अच्छा लगे, and you can think that you will going to make it by yourself. आप यहाँ पे easily उसको create कर सकते हैं यहाँ पे. These all are the graphics that will going to make your title more effective for your viewer, in front of your viewer. So I can take this vertical bullet list. This was actually a graph I have taken. So now you can now see there are many designs appear. This was the smart tool of this Microsoft PowerPoint. ये एक तरह से आपका smart tool है Microsoft PowerPoint का, that will going to leave a good impression on the readers. Like ये आपकी जिसको भी आप presentation present कर रहे हैं तो आपके viewers के सामने ये अच्छा एक impact show करेगा. Okay, there are many smart styles. You can see that आप यहाँ पे बहुत सारे आप देखिए, this is actually a design, smart styles, 3D styles. ये देखिए, now you can see that now it's in a smart style form. Okay, other thing is that you have many other options as well, like sunset scene as well. और you can see that यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मेंशन हो रहे होंगे. ये सब जो है स्मार्ट स्टाइल्स हैं, ये कोई नॉर्मल स्टाइल्स नहीं है, बल्कि ये आपके जो टाइटल को और भी ज्यादा इफेक्टिव एंड यू कैन मेक इट मोर clear to your viewers. There are many options you can see that you can make your text to be like that. यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है. Okay, so let's take an example. I can choose this option. I think that this was a good option. So I make my design as this form. So आप जो है इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी है. लाइक इफ यू डोंट नीड योर ब्लू कलर, सो यू कैन मेक एनी ऑफ द कलर यू वांट टू मेक. यहाँ रेड कलर भी है, ग्रीन भी है, मल्टी कलर्स भी है. लाइक इफ यू चूज द मल्टी कलर, सो सी the boundary, the outline was in a maroon color, the inner outline was in a light red color, and the main color was light brownish shade red. So यहाँ पे आपको 3 मल्टी कलर्स मिल सकते हैं if you will going to choose this option. So यहाँ पे green, purple, blue, red. So यहाँ different colors के option हैं जो कि आप यहाँ पे choose कर सकते हैं easily. So I can choose this blue for explaining you as an example. Okay, so ये जो है आपको mention होगा Technolitrate tech site. अब आपको एक अलग अंदाज में mention हो रहा है. Other thing is that in this design tab you can create other layouts as well. यहाँ पे आपने smart styles को जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पे layout की बात भी हम कर सकते हैं, because layouts are very much important for your text. लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे लेआउट्स शोन हो रहे होंगे, आप कोई सा भी एक लेआउट चूज कर सकते हैं दैट विल गोइंग टू मैच विथ योर टेम्पलेट, विद योर डिजाइन. आप यहाँ पे कोई भी लेआउट चूज कर सकते हैं दैट विल गोइंग टू चेंज द डिजाइन ऑफ योर टेक्स्ट, ऑफ योर हेडिंग. ये देखिए बहुत सारे डिजाइन है, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, जो कि 2010 के अपडेट में यहाँ पे आपको मेंशन हो रही है. इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है हमारे पास 2000 प्रीवियस वर्जन्स के अंदर, बट यू कैन सी दैट देयर आर मेनी वैरायटी इन दिस अपडेट. यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको मेंशन हो रहे होंगे कि आप इनमें से कोई सा भी जो है यू कैन चूज इट. See, there are many options you can see. So now you can check by yourself that when you will go to create anything on this version, on this PowerPoint, so now you will go to get by yourself that how many graphs you can see. अब आप यहाँ पे खुद explore कर सकते हैं, बहुत सारी different चीजें हैं. For taking an example, I can choose any of the thing, any of graph I want to take. Actually, I want you all to see that you can create a picture as well. Like आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी आप अपने टेक्स्ट के साथ ऐड कर सकते हैं. लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे इस लेआउट के थ्रू अब आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. सो नाउ आई वांट टू ऐड वन पिक्चर हियर. यहाँ पे आप कोई पिक्चर भी ऐड करते हैं. लाइक सी, नाउ दिस इज सीम्स लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब आपको यहाँ पे ये इस तरह के लेआउट्स, स्मार्ट स्टाइल्स, डिजाइन यूज करके आप अपने टेक्स्ट को और इफेक्टिव बना सकते हैं, अपनी हेडिंग को, अपने टाइटल को. ये एक्चुअली न्यू फीचर्स है. हम अब अपने पुराने फीचर के बारे में बात नहीं कर रहे कि वही ग्राफ्स और चार्ट्स और टेबल्स नहीं. अब हम एक न्यू स्टाइल और न्यू लेआउट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ 2010 अपडेट. So, इसके अंदर आप जो है अपने टाइटल के साथ साथ कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं दैट विल गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट टाइटल इन द फॉर्म ऑफ इमेज. लाइक आप यहाँ पे इमेज मेंशन करके अब आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो रहा है कि अब यहाँ पे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ. यहाँ मैं एक प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ व्हिच इज टेक्नोलाइट्रेट. इस तरह आप कोई भी अपने किसी भी टॉपिक प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आप इमेज अटैच करके उस हेडिंग को, उस टाइटल को और ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन कर सकते हैं. Okay, if you have any type of query, you can ask in the comment section, or you can open your mic and speak if you have any type of query you want to ask. Okay, so now we're going to move ahead, and if you can see in a graphic,
tab, you can see that there's an option of add shape. यहाँ पे कोई shape भी add कर सकते हैं. Like ये देखिए, अब जो जैसे कि आप देखते हैं टेक्नोलाइट्रेट टेक साइट जिस डिजाइन में मेंशन था वो सेम डिजाइन कॉपी हो चुका है, so that I can create any other thing as well. So this was actually shape for my heading. ओके, यहाँ पे आपको टेक्स्ट पैन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा. यहाँ पे आप कोई भी अगर इमेज लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मेंशन करते हैं, सो इट विल गोइंग टू ऑटोमेटिकली राइट ऑन दिस ऑरेंज symbol on this orange shape. Like for example, I can take that 2022 badge. So see, now I have written this text 2022 badge, and this was written on this symbol on this shape. So this how you can create more designs, more layouts through this text pen feature. Okay, other thing is that you can demote as well. Like अब आप जो है आपका वो जो shape था, now it was erased and the text was now attached to previous shape. 2022 बैच जो है अब आपका प्रीवियस शेप अटैच हो चुका है. पहले जो है आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे सेपरेटली एक न्यू शेप दी हुई थी बिकॉज आई हैव चूज टेक्स्ट पेन मोड. मगर अब जब मैंने इसको डिमोट किया, सो नाउ द टेक्स्ट वाज नाउ अटैच्ड टू previous shape. So this was actually a feature that will go to reflect more about your title. यानी कि आप टाइटल को टाइटल के साथ साथ आप उस टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं. So this was actually a very good and a smart update, which we can say that it's a smart style that was in the version of 2010. Other thing is that these was smart styles which we have discussed. Okay, let's come back to the home tab again. So यहाँ पे आपको होम टैब पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स नजर आ रहे होंगे जो कि प्रीवियसली हम लोग जो है लर्न कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी. लाइक दिस शेप ऑप्शन, यू नो दैट यू कैन क्रिएट any other shape you want to add. Other thing is that you can arrange your slides as well in a font. Like आप को जो भी स्लाइड पहले शो करनी है आप इस तरह यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं. एज आई हैव नॉट क्रिएट मोर स्लाइड्स, अभी तक हम एक ही स्लाइड पे काम कर रहे हैं, which is टाइटल स्लाइड. सो अभी कोई और स्लाइड यहाँ मेंशन नहीं है, इसलिए ये फीचर आपको यहाँ ब्लर नजर आ रहा होगा. वरना यहाँ पे अगर और भी स्लाइड्स हों जो नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे, सो वी कैन अवेल दिस feature as well. So other thing is that we have the quick style as well. Like you can change your this table. Like आप यहाँ पे कोई भी color choose कर सकते हैं. You can choose any of the color. You can choose any design of this text. आप यहाँ पे कोई से भी design choose करते हैं. There are many designs are available from this quick style. So I can choose a green, this orange color. So now you can see that my text, my design, my layout was totally changed. So you can change it through quick styles as well. Other thing is that if you don't want any other color in this quick style, आपको यहाँ पे कोई भी color नहीं पसंद आ रहा, you don't want any other color from here, so you can add your own color as well. यहाँ पे आप कोई अपना भी own color भी यहाँ add कर सकते हैं अपने layout के अंदर, अपने design के अंदर, अपने box के अंदर. So यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे designs mention हो रहे होंगे. So यहाँ पे कोई सा भी design आप mention कर सकते हैं. Let's take an example of this dark blue. Okay, with this you can add a picture as well. आप यहाँ picture भी कोई add करते हैं. So how? Let's see now. अब जो है जो इमेज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिए है, which is टेक्नोलाइट्रेट, और मैंने बैकग्राउंड में कलर की बजाय इमेज इंसर्ट कर दी है फॉर टेलिंग यू, फॉर शोइंग यू दैट यू कैन ऐड एनी इमेज एज वेल बिहाइंड योर टेक्स्ट. आप कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ना सिर्फ कलर ही ऐड करें आप, बल्कि कोई इमेज भी आप, कोई पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं. With this you can add the gradient as well. आप कोई gradient भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कलर का लाइट वेरिएशंस भी हैं, डार्क वेरिएशंस भी हैं. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूँ. इट इज फॉर सेम फीचर एज वी डिस्कस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन द टाइम वी आर डिस्कसिंग दी हाउ टू क्रिएट टेबल्स. जब हम टेबल्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्रेडियंट्स और टेक्सचर्स जो है हम दे सकते हैं. सो द सेम वे यू कैन गिव एनी ऑफ टेक्सचर एंड एनी ऑफ ग्रेडियंट टू योर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट टाइटल बार एज वेल. आप यहाँ पे टाइटल बार को भी कोई सा भी टेक्सचर या ग्रेडियंट दे सकते हैं. ओके, वन मोर थिंग. जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, व्हेन वी हैव स्टार्टेड अ सेशन, यू कैन सी दैट वी कैन गेट ओनली सिंपल बॉक्स एज लाइक दिस. लाइक आप देख सकते हैं कि सबटाइटल की बॉक्स के अंदर यू कैन सी अ सिंपल बॉक्स इन व्हिच अ कंप्यूटर कोर्स वाज रिटन. देन वी हैव एडिंग सम स्टाइल्स एंड मेक दिस लाइक दिस. उसके बाद हमने जो है बहुत सारे डिजाइन्स ऐड किए हमने यहाँ पे स्मार्ट स्टाइल्स में जाके. देन वी कैन गेट द मोर स्लाइड्स. लाइक शुरुआत में जैसा था ये अब ये टोटली बदल चुका है. So that you can avail in your
प्रेजेंटेशन एज वेल, आप इसको अपने प्रेजेंटेशन में अवेल कर सकते हैं और अपने डिजाइन को और स्मार्ट बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को. With this, we can have one more option, like you can give a shape effect as well. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स. सो हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि हाउ वी कैन क्रिएट, like how we can create this shadow, reflections, glow, like these all are the same things in the Microsoft Word and the PowerPoint as well. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके कलर्स हैं, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, they all are glowing. So now you can see that the outline was now in a glowing form. So it was actually a feature of Microsoft Word as well and Microsoft PowerPoint as well. यहाँ पे शेडो के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप आउटर शेडो, इनर शेडो, आप कोई सा भी शेडो जो है, यू कैन चूज इट एंड यू कैन अवेल दिस शेडो एरिया एज वेल टू मेक योर टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इफेक्टिव. बेवल भी है यहाँ पे, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेवल्स मिल सकते हैं आप लोगों को, और ये भी एक तरह से 3D ऑप्शन है यहाँ पे, और 3D रोटेशंस भी आपको यहाँ पे इजीली जो है वो मिल सकती हैं. यू कैन ऐड इट इन योर design. So these were actually the 3D shape effects that you can choose it. So this was actually the home tab which I have discussed in this session. So यहाँ पे आपको सिर्फ होम टैब में बहुत ही कम और बहुत ही कम चीजें नजर आ रही होंगी, because these all were, some of the things was in the previous update as well and some of the things was updated in this session. जो चीज इस वक्त अपडेट हुई है, so दो चीज अपडेट हुई हैं, एक स्मार्ट टूल एंड एक पिक्चर टूल्स. These were the two updates, which was a very good update that was in the 2010 Microsoft PowerPoint. अच्छा, स्मार्ट टूल तो मैं देख लिया, पर पिक्चर टूल, एज आई हैव टेल यू इन द कोर्स आउटलाइन, दैट विल गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन डू द पिक्चर editing on Microsoft PowerPoint. So this was actually one of the topic which we're going to discuss. It's under this Microsoft Tools sessions. So not today, but in the upcoming session. So now moving ahead, if you have any type of question, you can ask in the chat box, any type of question. These were the very important things which I was discussing, because later on you have to put these things in your design as well. आपको अगले सेशन में जब I will going to assign you some tasks, so when I will going to assign you some tasks for making a presentation, so you have to put these designs in your presentation. So if you have any query, you can ask the chat box to make your participation मार्क्स. आपके पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, अगर आप कुछ भी अगर आप यहाँ चैट में मेंशन करेंगे, सो आई कैन मार्क यू प्रेजेंट सो दैट यू आर अटेंडिंग माय सेशन. वी हैव enough students, so you can chat, write in the chat box any other thing you want to ask, or if you understood all the things, you can mention understood. We have 9 minutes remaining, so we're going to move ahead, and now we're going to have the insert tab. Okay, insert tab have the different options. यहाँ पे different options है. We can't complete these all option in today's session in these 9 minutes. So we're going to just I will tell you that how to create those things which was previous discussed. तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीजें मैं आपको यहाँ पे मेंशन है, जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंडरस्टैंड की थी, जो हमने समझी थी. सो टेबल, लाइक ये टेबल जो है इजीली आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं. टेबल यू वांट टू क्रिएट, यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स ऑप्शन है. नॉर्मली टेबल्स जो है आप टाइटल बार में नहीं आ सकते. जब आप आगे जाके जब आप कोई कंटेंट पे काम करेंगे, व्हेन यू विल गोइंग टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, बिकॉज इट्स अ टाइटल स्लाइड. जब आपको यहाँ पे जब फर्दर स्लाइड आप चूज करेंगे, सो देन यू विल गोइंग टू गेट लाइक हाउ यू कैन क्रिएट दी स्लाइड. लाइक सी, अब जो है हमारे पास न्यू स्लाइड है, और न्यू स्लाइड जो है, okay, Musaf has mentioned understood. So you all can mention, no issue if you write anything in the chat box. So now you can see that it's a text bar. यहाँ पे अब आप जो अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके ऊपर उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीज मेंशन कर सकते हैं. इस पे हम क्या वर्क करेंगे, मतलब हाउ वी कैन क्रिएट अ गुड एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एंड वी गोइंग टू गिव इट सम टिप्स एज वेल, लाइक हाउ यू कैन क्रिएट effective and a professional presentation in the further sessions as well. So Microsoft PowerPoint एक vast subject है which will going to take time to complete these all things. So now you can see that there's a picture option as well, like you can insert any type of picture you want to insert. Same, you have to click on picture and then you have to insert the picture. आपको यहाँ पे सेम फीचर नजर आ रहे होंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने डिस्कस किए थे. यहाँ बहुत सारे आपको डिजाइन या लेआउट्स नजर आ रहे होंगे दैट यू कैन गिव टू योर पिक्चर एज वेल. यहाँ देखिए बहुत सारे डिजाइन है पिक्चर्स के लिए. You can make your borders with different colors as well. आप borders को colors भी दे सकते हैं, आप border का weight भी increase कर सकते हैं. लाइक ये देखिए,
आप बॉर्डर की जो लेंथ, आउटलाइंस की लेंथ है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप डैशेस जो हैं, आप जो मतलब जो डिजाइन हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपने इस आउटलाइन के सी। यहाँ बहुत सारे आउटलाइन के डिजाइन आ रहे हैं। So these were actually things that you can give to your image. Other thing is that these, see, this was actually the previous thing which we have already discussed. Like ये जो है पिक्चर इफेक्ट्स हैं, आप पिक्चर इफेक्ट दे सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहे होंगे. So we have discussed, so we don't waste time on this. We going to move ahead. पिक्चर लेआउट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा. लाइक सी, यू कैन सी मैनी पिक्चर लेआउट इन दिस ऑप्शन. यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्चर लेआउट नजर आ रहे होंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द पिक्चर लेआउट एंड देन यू कैन डिस्क्राइब द पिक्चर इन द सेम बार. लाइक यहाँ पे मैं ये वाला आपको पिक्चर लेआउट शो करके दिखाता हूँ. लाइक नाउ यू कैन हैव द टेक्स्ट बॉक्स एज वेल विद द पिक्चर. सो आई कैन राइट इट हियर, टेक्नोलाइट्रेट लोगो. सो नाउ इस तरह जो है आप अपनी इमेज को किसी भी तरह आप डिफरेंट लेआउट दे सकते हैं अपनी इमेज को, और इससे ये होगा कि आपकी इमेज जो है व्यूअर के सामने अंडरस्टैंडेबल होगी कि ये किस चीज पे आप बात कर रहे हैं. सो दिस वाज एक्चुअली वन फीचर दैट यू कैन यूज इट इन योर डिजाइन्स फॉर मेकिंग योर पिक्चर मोर इफेक्टिव. ओके, इसके अलावा हमारे पास जो है वो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. लाइक आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे शेप फिल, शेप आउटलाइंस, और आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन हो रही होगी. लाइक यहाँ पे आपको शेप आउटलाइन जो जैसे मैंने डिस्कस किया, आप डैशेस वेट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं. शेप फिल है. अच्छा, शेप फिल क्या है? इसके अंदर आप कोई भी जो है आप शेप को फिल कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाएंगे टू मेक योर शेप फिल्ड. टेक्सचर आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप ग्रेडियंट इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट. इसके अलावा आप जो है और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें कर सकते हैं. लाइक आप यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हैं अपने इमेज के बॉक्स के अंदर. सी, देयर आर सो मच थिंग्स यू कैन डू विथ योर इमेज. आप इसको स्मॉलर कर सकते हैं, आप इसको लार्जर कर सकते हैं. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट विथ योर इमेज. उसके अलावा आपके पास बहुत सारे डिजाइन हैं, आपके पास ये बहुत सारे लेआउट्स हैं अपनी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए. सो ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो यू कैन डू दिस एज वेल विथ योर इमेज. स्मार्ट स्टाइल्स देख सकते हैं. कलर्स जो हैं आपको ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स आपको अपने लेआउट के मिल जाएंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर you want to choose. Okay, so now we're going to move ahead, and it's a clip art option. As you all know, it's a very common feature in each and every area. Like आपको Microsoft Word के अंदर ही मिलेगा, Microsoft PowerPoint के अंदर ही मिलेगा, and if you have worked on Microsoft Publisher, तो उसके अंदर आपको clip art का option मिलेगा. But this was actually a high level, so just take an example of Microsoft Word and Microsoft PowerPoint. दोनों फीचर्स में, दोनों आपको एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में क्लिप आर्ट का ऑप्शन जरूर मिलेगा. ये होता क्या है? इट्स अ सिंपल थिंग दैट आप यहाँ पे कोई भी चीज आप ये एक तरह से ये कंप्यूटर का स्टॉक होता है इमेजेस का. लाइक यू कैन सर्च एनी ऑफ द थिंग यू वांट टू ऐड इन योर प्रेजेंटेशन. लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक रोबोट. आपने सर्च किया robot and you have to press on go. If the robot was in the stock, so it will going to present the images of the robot in this white area, and if it doesn't have any stock related to robot or any other thing you have entered, so it will show that no result found. So यानी कि robot से कोई भी यहाँ पे robot का stock या नहीं है. So just take an example of computer. तो यहाँ पे आप कंप्यूटर मेंशन कर लें और आपको यहाँ कंप्यूटर का स्टॉक मिलेगा. देखिए बहुत सारे स्टॉक आपको कंप्यूटर का मिल चुका है. There are many images you can see. This was actually the clip art, so you can insert any other thing in your presentation. That will going to make your presentation more effective. आपने कंप्यूटर इंसर्ट कर लिया, अब यहाँ पे कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं इमेज को, और आपने यहाँ एक तरह से ये क्लिप आर्ट ऑप्शन से मिल सकती है. अदर थिंग इज दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. ये तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टूल के 2010 के अपडेट में मिलेगा. लाइक आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं. आप जो है वो लाइक आपने यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर करी, सो यू कैन गेट द स्क्रीन. आपको स्क्रीन कैप्चर करके आप अपने जो आपका जो वर्क है आप किसी के साथ अभी शेयर कर सकते हैं अपना वर्क स्क्रीनशॉट लेके. लाइक इफ यू विल गो टू क्लिक ऑन दिस स्क्रीनशॉट टैब, सो यू विल गो टू गेट दिस टाइप ऑफ एरिया, एंड देन you will going to select that area that would be selected for your screenshot. जो ये आप select करेंगे वो आपका screenshot के लिए save हो जाएगा, and then you will going to just clicking on download. यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक सेव, और यू कैन कॉपी इट एज वेल. सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का. ओके, सो नाउ अदर थिंग इज दैट वी हैव द फोटो एल्बम एज वेल. लाइक आप यहाँ पे एक न्यू फोटो एल्बम भी आप क्रिएट कर सकते हैं. लाइक अगर आपको एक से ज्यादा इमेजेस इंसर्ट करनी है, सो आप यहाँ पे फोटो एल्बम भी इंसर्ट कर सकते हैं. वी हैव 2 minutes रिमेनिंग.
तो यहाँ पे फोटो एल्बम के ऊपर हम यहाँ रुकते हैं और आज हमने जो है वी हैव डिस्कस द होल होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और इसमें कुछ फीचर्स पुराने थे, कुछ फीचर्स नए थे एंड द बिगेस्ट फीचर इज लाइक वी हैव डिस्कस द स्मार्ट टूल एज वेल फॉर आर डिजाइन। लाइक आपने यहाँ पे स्मार्ट टूल का जो है वो डिजाइन आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। आई होप कोई भी क्यूरी है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके मुसफ, आई विल गोइंग टू टॉक टू यू लेटर अबाउट दिस। ओके, सो आप जो है यहाँ पे कोई भी चीज जो है आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो so now you're going to get this sessions recording as well on the Google Drive as well on the YouTube channel as well. So आप जो है यहाँ पे easily आप यहाँ पे सब चीजें जो है यहाँ पे easily understand कर सकते हैं। ये थोड़ा vast subject है, so it's going to take time to complete. हमने आज फोटो एल्बम तक यहाँ पे लीव किया है, देन इन टुडे इन टुमारो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इन नेक्स्ट वीक वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजाइंस। लाइक बहुत सारे आपको डिजाइंस यहाँ मेंशन हो रहे होंगे, सी हाउ माय डिजाइंस आर देयर इन दिस अपडेट। आपको बहुत सारे नए डिजाइन आपको टेम्पलेट्स के शो हो रहे होंगे, सो दीज विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अपकमिंग सेशंस। यहाँ तो बहुत सारे आपका बैकग्राउंड स्टाइल्स भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम आपको अगले सेशंस में विल गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ट्रांजेक्शंस भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, यू कैन गिव एनी ट्रांजेक्शन एज वेल। एनिमेशंस भी हैं, स्लाइड शो फॉर्म में भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब भी है यहाँ पे। तो बहुत सारी अभी आगे चीजें जो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Those students who are not taking the classes regularly and they have any internet or lacking issue, so please try to resolve it because the course was now going ahead and many things we're going to discussing in upcoming sessions. Okay, last thing I want to tell you all that we're going to upload the recording as well as homework as well in our Google Classroom, so you all have to complete the homework on the given time. Thank you so much students. The meeting is ended in less than 1 minute remaining, so if you have any query you can ask on the WhatsApp. So Allah Hafiz, I hope you have understand many things related to Microsoft PowerPoint. Okay, your attendance is marked and I hope you're going to learn a lot from this session. Thank you so much everyone. Thank you so much.